Today's topic is rotational motion, one of the most important chapter of class 11th physics, right? This is a chapter student always fear that the chapter is very difficult. The questions are coming from different topics like work energy, laws of motion. Every concept is going to be used, and other than that you will have the different concepts of inertia. Moment of inertia is very important, and every object have different moment of inertia, radius of gyration, different terms are there. And definitely this chapter is somewhat needs more practice and more like concepts are required. But if you study and practice properly, definitely you will understand, and this is really interesting to understand. Just try to increase your observational power, because if you just observe the motion of the earth around the sun, it's not just rotating, it's revolving around its own axis. That means it is just not doing only circular motion, it is revolving around its own axis. That means a kind of combination motion is also there. Definitely you will have to go through the combination of concepts also, right? So without any fear you must start understanding the concept, because this is not something uh, you cannot solve, but you need to practice, and you need to stick with that chapter. And then you will feel the questions are not very difficult, right? So I will try to explain the questions, and just because this chapter is very very important, and definitely you will get 2 or 3 questions in each session. This time 18 questions were asked in this January session, and this is the most important chapter, I will say, because maximum questions were asked from this rotational chapter, right? So you should never skip this chapter, right? Okay, then I will start with my first question, and this is the flywheel having mass 3 kg and radius 5 meter. So first you must know that what is flywheel. Flywheel is a kind of disc. You can consider it like a disc. You can say it as a pulley also, and mass 3 kg is given, and the radius 5 meter is free to rotate about the horizontal axis, right? So don't get थिंग्स दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डर लगता है इस चैप्टर से। भाई डर के आगे जीत है ना? जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, and you know the formula, and you must know how to apply these concepts. When you will start solving, you will see that things are built within yourself, right? It's all about कि आप सॉल्व नहीं कर रहे हो इसलिए आपको डर लग रहा है। कॉन्सेप्ट्स आर सिंपली लाइक वर्क एनर्जी कॉन्सेप्ट्स आर देयर, एंड डिफरेंट थिंग्स माइन्यूटली, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको क्वेश्चन के साथ रुकना होता है, राइट? So this is the first question, and in this flywheel of mass 3 kg, radius 5 meter, is free to rotate about the horizontal axis. The string having negligible mass, right? Every point is important, and wheel and loose end and string is connected to 3 kg mass. The mass is kept at rest initially and released. That means यहाँ कुछ mass होगा, उसको initially 3 kg, and now it is released, right? Kinetic energy of the wheel when the mass descends by 3 meter. That means this mass is just moving like this, and ये 3 meter जब नीचे चला गया, right? At that point you need to calculate the kinetic energy. किसकी? इसकी kinetic energy नहीं पूछ रहा है, kinetic energy पूछ रहा है व्हील की, राइट? तो फ्लाई व्हील जो आपका डिस्क है उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस? तो काइनेटिक एनर्जी एक तो तुम्हारी इसकी होगी, तो आई विल जस्ट यूज द एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है कि जितना अगर ये नीचे जाएगा, दैट मीन्स इसका क्या होगा? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स अगर ये इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, हाइट कम होगी, तो डेफिनेट सी बात है पोटेंशियल एनर्जी लूज होगी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगा? गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कौन गेन करेगा? काइनेटिक एनर्जी विल बी गेन्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट एज वेल एज दिस फ्लाई व्हील एज वेल। जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं ना, तो हम पुली के डायनेमिक्स को इग्नोर कर देते हैं। दैट मीन्स हम जो पुली होती है उसको लाइट पुली मानते हैं, उसमें पुली का खुद का रोटेशन नेग्लिजिबल लिया जाता है। दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू ऐड हियर,
राइट। और हम वहां पे क्या करते हैं कि जो हाफ एम वी स्क्वायर होता है उसको एम जी एच से इक्वेट कर देते हैं, बट इन दिस केस द मास ऑफ द पुली इज ऑल्सो गिवन, तो आप समझ जाते हो कि ये रोटेशनल का क्वेश्चन है, और रोटेशनल के क्वेश्चन में यू नीड टू कंसीडर द rotation of the pulley as well, right? So I will just use the energy conservation, that means the loss in potential energy yani ki mgh will be equal to the gain in kinetic energy, right? The gain in kinetic energy will be simply half mv square, this is by the block, and kinetic energy of the pulley, that means it is, देखो ब्लॉक नीचे जा रहा है, वो स्पीड से जा रहा है, पुली रोटेट हो रही है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी यूज, दैट विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, right? So this is the translational kinetic energy of the block, and this is the rotational kinetic energy of the pulley. This is simply energy conservation I have written here, correct? So I will just solve this after that. mgh is equal to half mv square plus half I. तो पुली मैंने बोला it is just like a disk I is the moment of inertia, and moment of inertia of the disk you all know, that is half mr square, half mr square, and omega को you can write v by r, correct? तो omega can be written as v by r whole square. So this r square and this r square will get cancelled out because both are for the pulley radius, and half will become 1 by 4 mv square. This is 1 by 4 mv square and this is half mv square. अब मुझे क्या करना है कि ये 1 by 4 mv square ही निकालना है, because they are asking the kinetic energy of the wheel. तो ये व्हील का काइनेटिक एनर्जी है 1 by 4 mv स्क्वायर, जो है इसको मैं k ले लेती हूँ, दिस इज द k काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील. तो ये बेसिकली क्या है, 1 by 4 mv स्क्वायर को अगर तुमने k लिया है तो दिस इज नथिंग बट द 2k, राइट? तो दिस इज 2k plus k is equal to mgh, mass given that is 3, g 10 बोल रहे हैं, and h height is given, height कितना है, it is distance by 3 meter, right? So this will become 3k, it's simple now. 3k is equal to 90, that means k is equal to 30 joule, करेक्ट? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील निकाली है मैंने, और अगर मान लो इसमें पूछ रहा होता कि ब्लॉक की, तो तुम्हें हाफ एमवी स्क्वायर निकालना होता, मैंने जो निकाला है k, दैट इज 1 by 4 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील, माइंड इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. With the position vector r is given, it's I j k तुम्हें वेक्टर फॉर्म में गिवन है, and changes sign as minus r, that means पोजीशन वेक्टर को अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हो तो फॉलोइंग विल नॉट फ्लिप अंडर साइन चेंज, राइट? तो किसका साइन चेंज नहीं होगा, राइट? तो इफ यू आर चेंजिंग द साइन ऑफ द पोजीशन वेक्टर, डेफिनेटली द वेलोसिटी विल change, because velocity is the rate of change of displacement, correct? And after that, if the velocity is changing the sign, definitely acceleration will change, because acceleration is the rate of change of velocity itself, right? So acceleration sign will also change. And what about momentum? Momentum sign, linear momentum definitely change. Linear momentum is p m, मतलब that means mass into velocity vector, mv होता है, that is your mass and velocity vector. So velocity sign is changing, that means linear momentum will definitely change. And what about the angular momentum? Angular momentum को हम L से भी लिख सकते हो, नहीं तो J से भी लिख सकते हो, that is mvr, right? तो v velocity sign is changing, mvr लिख सकते हो if you're writing in the magnitude, otherwise m r cross v, r cross p लिखा था. In this vector form you can write it like r cross p vector, right? So if you are changing the flipping the sign of the displacement and momentum also, then definitely minus will become plus, that means angular momentum sign will not flip. So answer is angular momentum, correct? So the next question is, third question is, a solid sphere of radius 10 centimeter is rotating about an axis which is at a distance 15 centimeter from the center. So first you must draw the diagram, right? So what is happening, you must need to observe it. If you can visualize the question, the half of the problem is already solved, right? So what the question is saying, the solid sphere, so you must know what is solid sphere, just like your ball, cricket ball, and 10 centimeter is rotating about an axis, which is the axis is given, which is 15 centimeter from the center. That means the radius is 10, तो 15 यहाँ कहीं होगा इसके बाहर, outside the sphere. This is 15 centimeter. This is your axis about which your ball is rotating, and you need to calculate the radius of gyration. So what is radius of gyration? जो हमारा moment of inertia होता है ना, उसको बस equate करना होता है mk square से. तो what is moment of inertia? It's just like moment of inertia ना, rotation
को एक अपोज करता है, इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू द रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर हम लीनियर में इनर्शिया की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या है, इतना इनर्शिया होता है कि अगर आप कोई चीज स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट ही नहीं करना चाहते. तो फ्रिक्शन लाइक इनर्शिया इज समथिंग लाइक ऑब्जेक्ट वांट टू स्टे एट द सेम पोजीशन. अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. एंड इफ इट इज मूविंग देन वो मूविंग ही रहना चाहता है, इट डजंट वांट टू गेट एट रेस्ट until and unless the external force is applied, right? You all know that the Newton's laws of motion, it's all about inertia. And this is the rotational inertia. आपने देखा भी होगा, ऑब्जर्व होगा, फैन अगर ऑन होता है तो रुकने में टाइम लेता है, राइट? और अगर चल रहा है और स्टार्ट होने में टाइम लेता है, right? So this is all about the rotational inertia. And inertia is your scalar quantity, right? You can add it anytime. You don't need any vector addition for that. You just add it algebraically, right? So what the question is saying, to find the radius of gyration. So what I will do just calculate moment of inertia and I will equate it with mk square, correct? So what is moment of inertia? I'm just writing it here. For the sphere, you know that the moment of inertia is 2 by 5 mr square. 2 by 5 mr square for the solid sphere, right? And this is the parallel axis theorem. Agar hame, this is the 2 by 5 mr square is about the center of mass. If the sphere is rotating about its center of mass, but if it is rotating at some parallel axis, then you must add this distance, mhs square, you need to add it. Then you will add it m into 15 square. Simple. So what will be the answer? You just need to put the value. So 2 by 5 and the mass is given. Mass is not given. Okay, mass will get cancelled out since they are asking the radius of gyration. So I will write it mk square k equal. So mass will get cancelled out. M into 225, right? So m and m will get cancelled out. I need to calculate the k, right? So 2 by 5 and r square. Radius of the sphere is 10 centimeter, right? So 10 square is 100. So this is 100 plus 225. So this is become 40. 40 plus 225 is 265, correct? So radius of gyration is under root of 265. नो radius of gyration को k बोला है, n बोल दिया है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है. It's under root of n, तो under root of 265 is your answer. So they are asking the value of n, that is 265. This is your answer, right? So this was the question. Just look at the question. Question was not at all difficult, right? You are in the competition. You cannot skip any subject, any chapter. You cannot skip any chapter. And this chapter, especially, you can never skip because definitely you will get the question from this chapter. Two circular discs of radius 10 centimeter are joined at their center. So two discs are there and they are joined at by their center, and length of the rod is 30 centimeter. Mass of the rod is 600 grams. So you must first see what the data they are giving, and if the mass of each disc is 600 gram and applied torque between two discs is given. So you have given the torque. So the very important concept of the rotational motion is torque, right? So then if you have some pivot, that means if the object is fixed at a certain position and you're applying the force, then definitely it will rotate, right? So otherwise it will get displaced if you're not pivoting at certain point, right? If the mass of each disc is given and applied torque between two discs is given, the torque is given, the angular acceleration of the disc about, you need to calculate in the radian per second square, right? So angular acceleration or torque में you always know the relation between torque is equal to I alpha, right? So torque is equal to I alpha. I know the torque. हमें alpha calculate करना है, and if I am able to calculate the moment of inertia, then definitely torque को I से divide करोगे, you will get your answer, right? So simply what you need to calculate is your moment of inertia, and moment of inertia is a scalar. Just find it and add it. So individually, if I'll find the moment of inertia of the rod, so first दिस इज 30 सेंटीमीटर. तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, हम उसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैलकुलेट करते हैं पहले. तो सेंटर ऑफ मास होता है इसका मिड पॉइंट रॉड का. तो अगर सेंटर ऑफ मास, दिस इज योर सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के बाद वी विल हैव टू यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट? तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो रॉड का होता है दैट इज ml स्क्वायर अपॉन 12. तो L इज 30, तो ml स्क्वायर अपॉन 12,
plus I will write for the simplification of calculation. I will use the value of L later, so I'm just writing it in terms of L. तो ml square upon 12 ये रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो गया. तो अगर ये डिस्टेंस देखोगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? This is midpoint, this is 15 and this is 10. This is 10, then definitely this is 5 and this is 5. पूरा 30 है, ये 5 है, तो इसको तुम लिख सकते हो L by 6. मैं कैलकुलेशन के लिए L के टर्म में लिख दे रही हूँ, तो L by 6 लिखेंगे, राइट. तो अगर मैं इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगी तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस mr स्क्वायर यानी कि m इंटू एल बाई 6 होल स्क्वायर. अभी ये रॉड का हुआ है, रॉड के बाद आपको डिस्क का निकाल के ऐड करना है, राइट. तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? डिस्क का होता है हाफ mr स्क्वायर. बट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से अगर तुम डायमीटर के अबाउट डिस्क का निकालते हो तो तुम्हें पता है कि इट बिकम्स 1/4 mr स्क्वायर. तो यहाँ पे आपको डायमीटर के अबाउट निकाल के उसको जहां रोटेशनल एक्सिस है उसके अबाउट शिफ्ट भी करना है, राइट. तो 1/4 mr स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास डिस्क का, प्लस उसको मैंने डिस्टेंस शिफ्ट किया कितना? 10 सेंटीमीटर, यानी कि mr स्क्वायर ऐड कर देंगे, यानी कि m इंटू 10 स्क्वायर ऐड करेंगे, प्लस इस वाली डिस्क का भी क्या हो जाएगा? 1/4 mr स्क्वायर अबाउट द डायमीटर. 1/4 r इसमें ले रहे हैं बिकॉज दोनों डिस्क का रेडियस सेम है. 1/4 mr स्क्वायर इस डिस्क का हो जाएगा, और प्लस इसको 20 सेंटीमीटर शिफ्ट किया है तो इसमें m इंटू 20 स्क्वायर ऐड कर दो, करेक्ट. तो बस आफ्टर दैट सिंप्लीफिकेशन इज रिक्वायर्ड, यू कैन सिंपली सॉल्व इट. तो मेजर काम हो गया यहाँ पे. तो दिस इज ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस ml स्क्वायर अपॉन 36. तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे व्हाट यू विल गेट? ml स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1/12 प्लस 1/36 इज 36. 4 हो जाएगा, 4 9 जाए, यानी कि ml स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा. तो I इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली इन दोनों को ऐड करके लिख रही हूँ, दैट इज ml स्क्वायर अपॉन 9 प्लस ये हो जाएगा 10 स्क्वायर यानी कि 100 m. दिस इज 20 स्क्वायर यानी कि 400 m. तो 400 प्लस 100 इज 500 m. तो दिस विल बिकम 500 m प्लस 1/4 mr स्क्वायर. 1/4 mr स्क्वायर इज 1/2 mr स्क्वायर. सो 1/2 m मास. नाउ आई विल पुट, मैं इसको पूरा सीजीएस में कैलकुलेट कर देती हूँ बिकॉज यहाँ पे सारा डेटा सीजीएस में दिया है, नो प्रॉब्लम. तो यहाँ पे mr स्क्वायर, तो मास इज व्हाट? मास इज 600 इज गिवन, 600 ग्राम मास वाज गिवन. तो 600 mr स्क्वायर एंड r इज रेडियस ऑफ द